हेलो बच्चों। वेलकम बैक टू माय चैनल। So today we will start with a new chapter, the very first chapter of accounting, which is called Introduction to Accounting. Yes. So as I always say that this is grade 11th is the base to your career. So grade 11th में हम जो भी पढ़ेंगे, चाहे वो अकाउंटिंग हो, बिजनेस हो या इकोनॉमिक्स हो, हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है सो दैट हमारा बेस स्ट्रांग हो। और बेस स्ट्रांग होगा तो फॉलोइंग ईयर्स में यानी कि आपकी ग्रेड 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड इवेंचुअली योर जॉब, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो अकाउंटिंग इन ग्रेड 11th इज लाइक ABC, as we learn ABC in grade KG1 or KG2. It's like that. So accounting, let's start. Accounting, the ABC of accounting. Okay, now let's start with the term accounting first. What is accounting? See बच्चों, accounting एक process है. Okay, accounting is a journey, it is a process of, so please write it down. Accounting is a process of identifying, measuring, recording, categorizing, summarizing, interpreting, and communicating the financial transactions to the stakeholders. तो अकाउंटिंग क्या है, हम इसको डिटेल में जानते हैं. अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट? इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, categorizing, summarizing, interpreting, and communicating the financial transactions to the stakeholders. अब इन सारी की टर्म्स को हम अच्छे से समझते हैं. सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिफाइंग, यानी कि हमें किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करना है. सो फॉर आइडेंटिफिकेशन, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. फॉर आइडेंटिफिकेशन of business transaction, the rule is that we have to check for the B plus M rule. Here B stands for business and M stands for monetary value. Okay, so देखिए बच्चों, क्या बोलते हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन को हम कब बोलेंगे कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या बिजनेस ट्रांजैक्शन है? वो तब जब ये दो टू कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी. फर्स्ट इज बिजनेस. सो कोई भी एक्टिविटी अगर वो बिजनेस एक्टिविटी है तो वो एक बिजनेस की होनी चाहिए. इसको समझते हैं क्या मतलब है बिजनेस का. बिजनेस मतलब, देखिए फॉर एग्जांपल, लेट मी टेक एन एग्जांपल फॉर यू. आपके घर में आपकी मॉम है, वो आपके लिए खाना बनाती है, डेली कुक करती है. ओके, शी प्रोवाइड्स यू विद अ डिलिशियस फूड. Okay, now tell me something. Do you pay her for that food? Do you ever pay her for the food? No, you don't pay, right?
because that she cooks food every day for you for the affection that she has for you, because she loves you, she is affectionate for you. So that's why she cooks a delicious food every day for you. So this will not be called a business activity. But on the other hand, if she cooks food and sell it to the customer, okay, now she is selling, she is still cooking food, but now this time she is selling it to the customer. And in exchange of which the customer is paying money to her, right? So in this case, this cooking food or providing food is called a business activity. All right. So what are the two conditions for a transaction to be a business activity? First is that it should be done on regular basis. Okay. It should not be one time. It should be done on regular basis. So for example, if I say that your mom is cooking food and selling it to someone, but only one time. She is doing so only one time. So this will not be called a business activity because it is not happening on regular basis. So even though it has a monetary value, but it is not happening on regular basis, so it will not be considered as a business activity. Hence, it will not be recorded in the books of accounts. All right. And the second condition is it should have a monetary value. All right. So the example I gave you is when mom was cooking food for you, even though she cooks food on regular basis for you, but it did not have the monetary value, so it will not be recorded in the books of accounts. On the other hand, she when she is cooking food for the customer, she is doing it only once out as a hobby, but she is still charging some money, then also it will not be considered as a business activity and hence it will not be recorded in the books of accounts. But in the third scenario, when she is cooking food and selling it to a customer on regular basis for which she is charging some money, then it will be called as a business activity and hence it will be recorded in the books of accounts. So the two conditions, once again, two conditions for an activity to be a business activity, it should be on regular basis and it should have a monetary value. I hope this is clear. Okay, and that makes the second condition, which is monetary value. Means any business transaction will be called a business transaction when it has a monetary value. Okay, it should be measured in terms of money. So this point and this point are the same. So for an activity to be a business activity, if it satisfy both the rules, be the same rules, we will identify it as a business activity, a financial transaction, and hence it will be recorded in the books of accounts. I hope this is clear to you. Now, second point is recording. Okay. Now, accounting is, as we said, is the process of identifying. So we have learned how we identify a business transaction. Then is measuring. Measuring means, again, now second point is measuring. So measuring, again, it means that it should be measured in terms of money. Okay. So that is again repeated, but that's fine because it makes it a complete definition. So that's why I've written it here. So measuring means that a transaction or a business transaction
should have a monetary value. All right. Now, third is recording. Now, what is recording? Recording means once we are sure that any transaction which we are thinking of recording is passing the B plus M rule, we have identified it as a business transaction. The next step is to record it in the books of accounts. And when we talk about recording, we pass journal entries first. Okay, that's why it is also called as primary records, because we recorded at first. The first step in the process of accounting is to pass the journal entry. I hope this is clear to you. Then next is, after recording, we have categorizing. Now, what is the meaning of categorizing? See बच्चों, categorizing का एक और वर्ड होता है classifying. अब इस स्टेप में हम क्या करते हैं, हमारी जितनी भी जर्नल एंट्रीज है उनको हम डिफरेंट हेड्स में क्लासिफाई करते हैं. क्लासिफाई मतलब उनको हम सेपरेट करते हैं. Okay, all the transactions related to one item will be recorded in at one place, and likewise every other item which is of a similar nature or which is same, we record it at one place. That is called categorizing, and we do this by way of ledgers. Okay, we will learn about ledgers, journal entries, everything in detail. But for now, what is important for you is to just understand what is the accounting process all about. All right. Then the next step is summarizing. Now, after we are done with the categorization, we have made the ledgers. The next step is to summarize. Okay. So we have a number of transactions. We have made the ledgers for the same. After that, next step is we have to make a summary of it. Okay. Summarize it. And for that, we prepare trial balance. We prepare statement of profit and loss, and we prepare balance sheet, okay, which is also called position statement. I hope this much is clear to you. Okay. Now next is interpreting and communicating. Okay. So interpretation, interpretation, and we call it as analysis also. It is done by way of calculating ratios. Okay. We calculate ratios, about which we will learn in grade 12. Okay, so please don't get confused or anything. We will learn everything step by step. And the last is communication. Okay, we communicate it by publishing, by way of publishing annual reports. Okay, and at the end, see, I have written to the stakeholders. Now, who are stakeholders? Stakeholders are the users of information. Okay, so that about that we will learn in some time. For now, let's do a quick recap of what is accounting. Accounting is a process of identifying, which we do by way of following the B plus M rule. Then measuring means the transaction should have a monetary value attached to it. Then third is recording. And how do we start our recording? By passing journal entries. Categorizing is we will classify the journal entry by way of ledger posting. And then we will make a summary of it by way of making trial balance,
statement of profit and loss account and balance sheet. Interpreting is when we are analyzing it, we are giving our view on it. It is done by way of calculating ratios. And then communicating, we communicate it by publishing the financial statements and the balance sheet in the annual report. Okay. Now, stakeholders. Who are stakeholders? Let's just quickly have a look. See, people get confused. Students normally think that stakeholders are same as shareholders. आप बताइए, आपको लगता है ऐसा? Which is not true. Okay, so this is your take home today, that stakeholders are not same as shareholders. They both are different people. Now let's, because actually stakeholder is a broader term and this is just a part of it. Okay, so let's learn them one by one. Who are the stakeholders? So basically, stakeholders are the interested parties who have interest in our financial statements. ये वो लोग होते हैं जिनको हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्ट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जानने का इंटरेस्ट होता है. ओके, तो वी हैव broadly categorized them into two groups. One is the internal user of financial information, and the other one is the external user. Okay. Now, internal user, who are internal users? See, actually internal users are वो users जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही पाए जाते हैं, जैसे कि यानी हमारे बिजनेस के अंदर ही पाए जाते हैं. जैसे कि पहला हो सकता है मैनेजमेंट. ओके, top management, which comprises of CEO, CFO, and all the top managers. Okay. Then second हो सकता है एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज को भी जानने का हक है कि उन्होंने कैसा बिजनेस किया है, क्योंकि इवेंचुअली एम्प्लॉयज ही हैं जो हैंड्स हैं, who are running behind, help working behind the success of a company. Okay, so employees could be the next user. Then third is, it can be a salaried employee or it can be a labor. Okay, labor भी हो सकती है. Then is the investor. ये वो आदमी है, इन्वेस्टर्स, या इनको हम शेयर होल्डर्स भी बोल सकते हैं. ओके, वो लोग जिन्होंने हमारे बिजनेस में ऑलरेडी पैसा लगा रखा है, उनको भी जानने का हक है कि बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया है ड्यूरिंग द ईयर. ऑलराइट, देन नेक्स्ट कुड बी, हु कैन बी द नेक्स्ट वन, टेल मी. Okay, so these are the three internal users of financial information. एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं. मैनेजमेंट, which comprises CEO, Chief Financial Officer, Chief Executive Officer and all top managers, वो आते हैं हमारे मैनेजमेंट में. दूसरा है एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज में सैलरीड एम्प्लॉय भी हो सकता है, लेबर भी हो सकता है. एंड तीसरा है इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ financial information. So the first is, who can be the first? Let's talk about the investors first. These are the potential investors. Okay. Now potential investors कौन होते हैं? वो investors जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं. अभी उन्होंने लगाया नहीं है पैसा, हमारे बिजनेस में पैसा डालना चाहते हैं, उन्हें बोलते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स. तो वो पैसा डालने से पहले वो जानना चाहेंगे कि हमारा बिजनेस कैसा कर रहा है. इसके लिए उन्हें हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की
जरूरत पड़ सकती है। ओके, देन इज गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटीज। अब गवर्नमेंट और टैक्स अथॉरिटीज कैसे, कि हमारी टैक्स अथॉरिटीज और गवर्नमेंट ये जानने में इंटरेस्टेड रहती है कि हमने जो अपनी बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त जो हमने प्रॉमिस किया था कि हम क्या बिजनेस करेंगे, क्या हम अप टू द मार्क कर रहे हैं या नहीं। टैक्स अथॉरिटीज जानना चाहती हैं कि क्या हम अपना टैक्स सही कैलकुलेट करके टाइमली पे कर रहे हैं या नहीं। ओके, तो ये उनका इंटरेस्ट रहता है। देन नेक्स्ट इज the banks and the lending institutions. So banks or any other financial institutions. Okay. Now financial institution, banks तो आपको पता है क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। देखो बच्चों, बैंक के अलावा भी कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो हमें फाइनेंशियली असिस्ट करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। ओके, जैसे आपने अगर सुना हो मुथूट फाइनेंस। ओके, मुथूट फाइनेंस क्या करता है, उसका काम है कि इट गिव्स अस लोन अगेंस्ट द गोल्ड। तो अगर आपको लोन की जरूरत है तो वो आपसे गोल्ड मांगेगी, तो आपके पास जितना गोल्ड है आप उसको गोल्ड देंगे, वो उस गोल्ड को इवेल्युएट करके आपको बताएगा कि आपको कितना लोन मिल सकता है। ओके, एंड देन दे स्पेसिफाई द पीरियड कि इस पीरियड तक आपको लोन देना होगा, रीपे करना होगा, एंड टिल दैट टाइम आपका गोल्ड उनके पास रहेगा। उस फिक्स पीरियड के बाद जब आप अपना पैसा रीपे कर देंगे, लोन का पैसा रीपे कर देंगे, तब वो आपका गोल्ड आपको वापस कर देंगे। ओके, तो कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये जानना चाहता है कि आपका बिजनेस कैसा कर रहा है, आपके बिजनेस की रीपे कैपेसिटी कितनी है, ये सब जानने के लिए उनको आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए हो सकती है। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज द सप्लायर और द ट्रेड क्रेडिटर्स। सप्लायर्स और ट्रेड क्रेडिटर्स, अब ये लोग कौन होते हैं। देखो बच्चों, जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें, सपोज मान लीजिए हमने एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें उसका रॉ मटेरियल चाहिए, राइट। तो रॉ मटेरियल जो हमें देता है, जो हमें रॉ मटेरियल सेल करता है, उसे हम सप्लायर बोलते हैं। ओके, या ट्रेड क्रेडिटर बोलते हैं। तो बिजनेस, जो प्रैक्टिकली बिजनेस सिनेरियोज में क्या होता है कि जब भी हम सप्लायर से अपना सामान खरीदते हैं तो हम यूजुअली क्रेडिट पे खरीदते हैं, नॉट एवरी टाइम वी पे देम मनी। ओके, क्योंकि अगर आप पैसा सारा उसको दे देंगे इनिशियली, तो आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस कहाँ से खर्चा करेंगे। आपके पास वर्किंग कैपिटल का, आपके पास पैसे होने भी बहुत जरूरी है। ओके, तो आप क्रेडिट अपने सप्लायर्स को बोलते हैं कि हम आपको आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम देंगे, पैसा पे करेंगे। तो उस चीज, उस क्रेडिबिलिटी को चेक करने के लिए दे वुड वांट टू नो योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपकी पोजीशन को वो जानना चाहेंगे कि आपका कैसा प्रॉफिट रहा पिछले साल, क्या आप मेरा पैसा पे करने लायक है भी या नहीं। ये सब चेक करने के लिए उनको आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट है हमारा कस्टमर। अब आप सोचेंगे कस्टमर को क्या जानना है हमारे बिजनेस के बारे में, उसको क्यों जानना है। ऑलराइट, तो जरा एक बात बताइए कि अगर आप मान लीजिए किसी नई चीज को खरीदना चाहते हैं, ओके, एज अ कस्टमर, आप मान लीजिए एक कार खरीदना चाहते हैं, राइट। नाउ जब आप कार खरीदने का सोचते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन योर बजट आप मार्केट रिसर्च करते हैं कि हमारे बजट में कौन कौन सी गाड़ी हम खरीद सकते हैं। ऑलराइट, अब सडनली क्या हो, सडनली कोई बोल दे कि आप मारुति की गाड़ी खरीदना चाहते हैं लेकिन मारुति तो बंद होने वाली है, तो क्या आप मारुति की गाड़ी खरीदेंगे। नहीं खरीदेंगे, राइट। बिकॉज यू नो कि मारुति मारुति तो बंद होने वाली है, वो अच्छा बिजनेस नहीं कर रही है। तो अगर फ्यूचर में आपको उसकी किसी पार्ट की रिपेयर की जरूरत पड़ी या एक्सचेंज की जरूरत पड़ी या सर्विसिंग की जरूरत पड़ी, तो आपको कहाँ से मिलेगी वो सर्विस, क्योंकि कंपनी तो बंद हो चुकी है। तो आप उसमें पैसा नहीं लगाएंगे। ऑलराइट, तो यही सब जानने के लिए एक कस्टमर भी चाहता है कि वो जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, जिस कंपनी से सामान खरीद रहा है, वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक बार देखे।
बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कस्टमर चेक करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को. बट theoretically, a customer may also be interested in knowing the financial statements of a company. All right. I hope I am getting clear. Yes. Yes. Okay. Now the last is, but not the least. All right. So the last is our general public. Now, why general public? Just think about it. Why general public? Because general public is the king of market. Okay, or I can say it is, the general public is the king of economy. So being a part of an economy of a country, general public would also like to know how a upcoming company is doing. How are they doing? What activities are they into? Where are they spending money? What is the CSR activity that they are fulfilling? Okay, CSR activity is, what is it? It is corporate social responsibility, about which we will learn in business studies. Okay. So for now, what is important for you is to know the stakeholders. So who are the stakeholders? Let's do a quick recap. Stakeholders are those parties who are interested in knowing the financial statements of a company. Okay. Then we have classified them into two major heads, which is the internal user and the external user. In the internal user, we have management, employees, and investors, who are also called the shareholders. In the external users, we have potential investors, government and tax authorities, banks and financial institutions, suppliers and trade creditors, customers, and general public. I hope this is clear to you. All right, children. So in today's class, what did we do? We learned about the meaning of accounting, which is the process of identifying, measuring, recording, categorizing, summarizing, interpreting, and communicating the financial transactions to the stakeholder. Then we learned how do we identify a business transaction? We follow the B plus M rule to identify any transaction as a business transaction. Right? Then we measure it in the monetary value in terms of money, that is a must. We should record it by way of journal entries. We should categorize it by way of ledgers. We should summarize it by way of trial balance, statement of P&L and balance sheet, which is also called position statement. Then we interpret it and analyze it by way of calculating ratios. And finally, we communicate it to the stakeholders by publishing the financial statements in the annual reports. All right. So now I hope your confusion between the stakeholder and the shareholders is clear. Okay. So stakeholders, we have learned the internal user and the external users in detail. All right. So this is for today. I will meet you in the next class with something more interesting and exciting. Until then, you please revise what we have done in today's class and see you in the next video. Bye bye for now.